Okay everyone, we are going to discuss the course contents that you're supposed to focus for midterm. Look at these lectures. In the very first lecture we talked about parts of speech, right? Parts of speech में आप क्या focus करेंगे? Nouns and verbs को only. वो भी बहुत basic level के. The rest of it you can leave them out. Nouns and verbs, right? Then we talked about function words, content words, if you remember. Apart from this, we talked about language skills. We talked about there are 4 basic skills of language: writing skills, speaking skills, reading and listening skills. ठीक है, उसके बारे में हमने बात की. Then we talked about the receptive skills and productive skills. जी बेटा जाए. रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स, 2 चीज़ों में हमने इसको डिवाइड किया स्किल्स को, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव में. रिसेप्टिव कौन सी होती है? रीडिंग एंड लिसनिंग. प्रोडक्टिव है राइटिंग एंड स्पीकिंग. देन वी हैड वन स्पीकिंग एक्टिविटी इन द क्लास विच इज़ नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर मिड टर्म. ऑफ कोर्स it was there for you to actually understand how to speak well, how to speak confidently. So lecture number 5 is not part of your midterm syllabus. Then we talked about sequential writing. We talked about transitional markers, right? Yes. बेटा पहले चारों में फर्स्ट वन है, सेकंड भी है, थर्ड एंड फोर्थ को यू कैन लीव. एक दफ़ा आप सुन लें पूरे कोर्स को, फिर मैं आपको लेक्चर वाइज बता देती हूँ कि कौन सा वाला फोकस करना है, राइट? सीक्वेंशियल राइटिंग की बात की, ट्रांजिशनल मार्कर्स की बात की. यू हैड एन असाइनमेंट ओवर इट एज वेल, सो यू नो व्हाट आर दोस. Then we talked about paragraph writing. Does it include? Topic, sentence, coherence, elaboration, conclusion, etc. We talked about all these things. Then we had phrases and clauses. We talked about phrases and clauses. And then we talked about subject and predicate. Is that all? Apart from this, we did not focus. Now let me tell you about what you need to focus for midterm. You're going to focus on lecture number 1 in terms of nouns and verbs only, lecture 1. Then you're going to focus on lecture 2, function words and content words. Then you're going to focus on aista bole, lecture number 6, that is sequential writing and transitional markers. We talked about these. Lecture number 6, yes बेटा. lecture number 6 से पहले आपके पास है lecture 1 and 2. Lecture 1, 2, 6, then 7, then you have lecture 7 and 8. Basically 6, 7, 8 एक ही बात है, लेकिन हमने separately बात की थी, and that is why I have posted it that way. Then you are going to focus on lecture number 9, that is phrases and clauses, very basic level. Then you are going to focus on, we also talked about reading comprehension, skimming and scanning, which I have not posted yet. I will post it as lecture number 15. So you are going to prepare lecture number 15 as well, which will include skimming, scanning, a comprehension passage where you can have certain questions. After this, आपने quiz भी दिया है probably about it, if you recall. दिया है? Yes. Yes, you did. इसमें से किसी एक बच्चे के 5 out of 5 थे, right? I don't think so. It was I don't know, नाम नहीं पता. By face मुझे पता है. इरफान नहीं, sorry. फारूक. So lecture number 1, 2, 6, ठीक है. उसके अलावा 7, 8, 9 और 15, जो मैं 15 अभी पोस्ट करूँगी. अब बताएं इफ़ यू हैव एनी रेलिवेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग मिड टर्म. रही बात पैटर्न की, पैटर्न में आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. 3 क्वेश्चंस में क्या होगा कि मार्क डिविजन तो मैं आपको नहीं बताने वाली, लेकिन पेपर बहुत इजी है. बहुत हाई एम मत करें, बहुत कम्प्लेक्स लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है. वो जो चैप्टर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हैं, रीडिंग बेसिक्स एंड राइटिंग बेसिक्स, उसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है राइटिंग प्रोसेस का, रीडिंग प्रोसेसेस का एंड मेथडोलॉजीज़ का. उसमें कौन से आ जाते हैं, जो मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स आई थिंक बताया भी है. रीडिंग मेथड्स में आपके पास आता है कौन से रीडिंग मेथड्स कौन से होते हैं, बता सकते हैं?
राइटिंग प्रोसेस क्या है? We have talked about these multiple times. If you don't understand, you are going to lose marks because there is a relevant question in the midterm examination regarding reading methods and writing process. Reading methods में अभी मैंने आपको 2 बताए दिए. Scanning and skimming. That's correct. जनरल अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में होनी चाहिए in order to solve your midterm examination. Then talking about writing process. Writing is a process. We talked about it. What kind of a process is it? Cyclic. Which means that if you go to point number 4, step number 4, you can always go revisit step number 1. It is cyclic. It has no end. आप एक स्टेप पर आते हैं, अगर 5 स्टेप्स हैं तो आप तीसरे स्टेप पे बार-बार जा सकते हैं in order to make it better. तो क्या नाम है इन स्टेप्स के या लेवल्स के या स्टेजेस के? नहीं पता? ओके. यस मैम, ये वाला. These are the steps. It is available in that chapter जिसका नाम है Writing Basics. Page number 23 पे आपको ये पूरा बना हुआ मिल जाएगा. What you need to know the names and the characteristics. For example, if you are going to talk about what do we talk about in step number 1, that is generating ideas, there are different strategies. You can use an infographic, you can use a flow chart, or maybe outline, or maybe you can go for bullet points. आइडियाज जनरेट कैसे करते हैं? यूजली हम क्या करते हैं, हम एक आइडिया लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया, ये आइडिया हो गया, और उसके बाद हम उसके पॉइंट्स को ऐसे बना के कोशिश करते हैं ना कि हम क्या क्या ऐड करेंगे. तो ये एक टेक्निक है जिसे फ्लो चार्ट कहते हैं, इन्फोग्राफिक कहते हैं, आउटलाइनिंग कहते हैं. इट्स अवेलेबल इन दैट बुक एज वेल. देन वी टॉक्ड अबाउट स्टेप नंबर 2, दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग में यू रिसर्च अबाउट द टॉपिक दैट हैज बीन असाइन्ड टू यू. ठीक है कि आप क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड नहीं करेंगे. इफ यू रिमेंबर, आई माइट हैव सेड दिस सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड ऐड रेलेवेंट मटीरियल. देन कम्स ड्राफ्टिंग. ठीक है, ड्राफ्टिंग का मकसद क्या है? टू गेट इट रिटन. जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे आप लेटर लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं, यू आर गोइंग टू गेट इट रिटन. जब एक दफ़ा आप लिख लेते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं. वो नीट नहीं होता, उसमें मिस्टेक्स होने के चांस होते हैं, उसमें अभी भी चेंजेस हो सकते हैं जो आप नेक्स्ट स्टेप में जाके रिवीजन में जाके करते हैं. रिवीजन में क्या होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिवीजन एंड एडिटिंग? जी असर दोबारा बताएं. एंड व्हाट अबाउट द एडिट का क्या मतलब होता है? रिवीजन हैज टू डू विद कंसेप्ट लेवल. अगर कोई आइडिया ऐड करना है या आइडिया निकालना है, किसी और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो यू मेक इट बेटर इन टर्म्स ऑफ आइडिया. बट इन एडिटिंग यू मेक इट करेक्ट. यू लुक फॉर द ग्रामेटिकल मिस्टेक, पेंसिल मिस्टेक्स, एनी सब्स्टिट्यूट वर्ड्स. समटाइम्स हम कुछ वर्डिंग्स ऐसी यूज़ करते हैं जो कि सूटेबल नहीं होती, तो वो आप एडिटिंग भी करेक्ट कर सकते हैं. पंक्चुएशन करेक्ट हो सकती है, स्ट्रक्चर करेक्ट हो सकता है. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिविजन and editing is कि revision में you make it better and you make it correct in editing. जैसे आप पिक्चर्स एडिट करते हो, वीडियोस एडिटिंग करते हो, तो उसमें हम क्या कलर्स, शेड्स ऐड करते हैं. कोई एक्स्ट्रा शेड कहीं बढ़ रहा तो उसे कम करने की कोशिश करते हैं, ब्राइटनेस ऐड कर लेते हैं, और भी स्टिकर्स भी ऐड हो जाते हैं. आजकल तो बहुत कुछ हो जाता है. तो एडिटिंग में हम उसको तस्वीर को बदल नहीं रहे होते. वी आर जस्ट एडिंग मोर फ्लेवर टू इट. We are making it more presentable. Isn't that so? Same goes for editing in writing. That should make your writer more acceptable for the audiences so that they can understand it
well. However, revision में, let's say you talked about smoking, you talked about 3 reasons, but you think that you need to elaborate reason number 3 more, so you go back and you revise it. Draft का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक दफ़ा आप लिख लें, and after that you can keep evaluating it, keep improving it by going into the stages of revision and editing. इसके बाद एक और step होता है जिसको आप कहते हैं सबमिशन. इन योर केस इट इज गोइंग टू बी सबमिशन. फॉर एग्जांपल आप एग्जाम के लिए क्वेश्चन लिखते हैं तो आप सबमिट करते हैं, असाइनमेंट लिखते हैं तो सबमिट करते हैं. यूजुअली ये प्रोसेस एकेडमिक राइटिंग का हिस्सा है, जिसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि यू गेट इट पब्लिश्ड. कभी रिसर्च आर्टिकल्स देखे आपने, राइट? तो वो पब्लिशिंग जो है वो उसका लास्ट स्टेप होता है. तो राइटिंग प्रोसेस में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, इनके नेम्स आने चाहिए और इनके करेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए. इफ़ यू हैव रेलेवेंट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन यू शुड गिव एग्जाम्पल्स. हाउ विल यू गिव एग्जाम्पल्स? जैसे जनरेटिंग आइडियाज़ में आप आउटलाइनिंग दे के एक आउटलाइन की आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. प्लानिंग में आप प्लान करते हुए दिखा सकते हैं कि अगर मैं स्मोकिंग पे लिखने लगा हूँ तो मैं ये 3 पॉइंट्स लिखूंगा और 3 रीजंस लिखूंगा और 3 इफेक्ट्स लिखूंगा, एंड दैट विल बी ऑल प्लान करेंगे. कौन से सोर्सेज यूज़ करेंगे. फिर ड्राफ्टिंग में आप सिंपली बता सकते हैं the purpose of drafting is to get it written once and for all. Then you can talk about editing and revision as well with the help of examples. Examples आप मिलेंगे. Of course real life दे सकते हैं, नहीं तो अगर आपको examples खुद बनानी ना आ रही हो, this module is easily available on internet. You can definitely take a look at it. One more thing, that I will not be available on the day of examination. There is a high chance that I won't be able to pick up the call as well because I am busy elsewhere. So whatever you understand in the exam, just attempt that. Do not bother the invigilators. You have been given time 1 hour to think about possible questions and ask questions. आप उस दिन पूछेंगे तो चांस है कि मैं रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ, इसलिए जो समझ आए उसे अटेम्प्ट करें. अगर आप मुझसे कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, they will no longer be my students. I will not look at them. I will let them sit in the class, but they will sit at the end. और वो भी उस तरफ मुड़ करके, they won't be part of this class. You find it funny, this is very offensive for me. If some of my students are caught cheating, seriously, I take offense. Do not cheat. गलत लिख ले, ठीक है, काम लिख ले, cheat मत करें, right? जी बेटा, अगर आप cheat करेंगे तो मैं आपको penalize करूँगी किसी और तरह से. और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स? पैटर्न में आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे. मार्क्स डिवीजन रहने दें. अच्छा चलिए बता देते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है. पहला क्वेश्चन आपका है 12 मार्क्स का. सी 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके सब पार्ट्स हैं ना. MCQs नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर है जो डायरेक्टली आपको कुछ आइडेंटिफाई करने को कहता है. वो MCQ टाइप नहीं होता है. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? सोच ले, सोचे.